हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्षित मंत्री। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी आइल्स किंग। आज से मैं आपको आइल्स में यूज होने वाले जो क्यू कार्ड्स है, जो कि अराउंड 100-110 क्यू कार्ड्स अपने पास अवेलेबल है। आई एम गोइंग टू क्रिएट वेरियस वीडियोस। उसके अंदर मैं हर एक टॉपिक को लूंगा, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि उसके ऊपर आप 2 मिनट कैसे बोल सकते हो। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू सम सजेशंस एंड आइडियाज। सो लेट्स बिगिन। So the very first topic is describe a foreign country that you would like to visit in the future. So future में आपको कोई country visit करनी हो तो इसमें आप लोग बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ा बना सकते हो कि मैंने ये कंट्रीज ऑलरेडी विजिट की हुई है एंड दिस इज द कंट्री दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर इन फ्यूचर बिकॉज आई हैव हर्ड अ लॉट ऑन सोशल मीडिया। और ये सब आप कुछ स्टोरी बना सकते हो एंड देन यू कैन टॉक अबाउट दैट कंट्रीज कल्चर, यू कैन टॉक अबाउट दैट कंट्रीज फूड। ऐसा आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसे आप सिंगापुर ले लीजिए, दुबई ले लीजिए, मलेशिया ले लीजिए, आप कोई भी particular part that you have visited. Here I am going to talk about Thailand. So let me give you idea कि आप 2 मिनट इसके ऊपर कैसे बोल सकते हो। Well, I love to travel a lot and so far I have traveled to many different places, many different domestic places as well as international places. In India, if I have to talk about, my favorite place has always been Goa, and I have been to some other countries like Singapore, Malaysia, then I have been to Indonesia. They all are fantastic. The reason behind me exploring these countries is like I love to know about their culture, I love to know about the people, their food and everything. So there is one country that has always been in my wish list which I want to explore very badly, and the country's name is Thailand. Actually, in many Bollywood movies, the breathtaking views, the landscapes, the sceneries of Thailand are shown, and that's the reason why I'm quite fascinated about exploring this particular place. On social media, there are plenty of reels available related to Thailand, their culture, their mango sticky rice, their temples, the way they follow Buddhism. So that's the reason why I want to visit this place. And in future, maybe after 6 months, I am going to visit this place with my family members or with my friends. So we have been planning for the same. So the main reason behind visiting Thailand is there is a very big Buddha's temple, and there is a gigantic statue of Lord Buddha over there. People from all over the world come to this particular place to learn about meditation and to learn about the Buddhism religion, and I am also having little bit of interest in knowing more about it. Apart from that, there are wonderful beaches and mountains available in this country, and Phuket and Krabi are the one which I really want to go and I want to explore. In many Hollywood movies, the sceneries of these two places are shown, and I have heard that the the beaches are amazing. You can even get the breathtaking swimming experiences. So Thailand is the country that I would love to explore in future. So guys, आप ऐसे 2 मिनट बोल सकते हो। I hope you enjoyed this particular topics content. इसके अलावा आप बहुत सारी चीजें बोल सकते हो, जैसे the flights for Thailand are affordable. फिर आप वहाँ की हॉस्पिटैलिटी के बारे में बता सकते हो, वहाँ के कल्चरल एक्सपीरियंसेस के बारे में बता सकते हो। थाई फेस्टिवल्स होता है, वो थोड़ा अगर आपने बहुत डिटेल में स्टडी किया हुआ है या आपने ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड करके अगर आप बोलते हो तो आप ये सारी चीजें भी आपके टॉपिक के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा मैंने जो कंटेंट बोला है उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स मर्ज अप कर लीजिए और आपका कंटेंट रेडी। सो फॉर द नेक्स्ट क्यू कार्ड, please wait a little. I'm going to upload it very soon. Or if you are new to this channel, then please like, share and subscribe this channel. I'm going to cover whole range of cue cards and I'm going to give you plenty of ideas on how to speak. और मैं खुद बोल के आपको बताऊंगा कि 2 मिनट कैसे बोलना है। Thank you so much.